battle for the crown of Rajasthan is today as 199 seats go to polls in single phase. Nearly 1900 candidates are in the race for contest and the seats in Rajasthan's elections. Now it's a direct battle between BJP and the Congress in the state. Remember, polls in Sri Ganganagar's Karanpur seat were adjourned after the death of Congress candidate and sitting MLA Gurmeet Singh Kunur. Now, the ruling Congress party is eyeing a second straight term in Rajasthan. But it won't be easy for the Congress, which has had a tradition of changing parties in governance for the last 3 decades. So the question that will be answered on the 3rd of December is, will Congress retain Rajasthan or will the anti-incumbency lead to win for BJP? अशोक जी 2 महीना पूरा कैंपेन हुआ है, क्या माहौल लग रहा है? वोटिंग तो पास आ गई है बिल्कुल। शानदार माहौल है, अंडर करंट चल रहा है, सब जगह रहता है हमारे ग्राम में। तो लोग कामों को याद करते हैं, गवर्नेंस हमारी जो हुई है, गुड गवर्नेंस हुई है, IT बेस्ड गवर्नेंस हुई है, इतने कानून पास किए हम लोगों ने, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है, इतनी स्कीम लेके आए, इतनी गारंटी दे रहे हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में खूब काम हुए हैं, शिक्षा में, सोशल सिक्योरिटी के अंदर। बीजेपी ने पूरा धावा बोल दिया सर आप पे, PM ने, अमित शाह ने, बिल्कुल क्या क्या बोला गया आपको? कारण दूसरा है, क्योंकि सरकारें गिराने का इनका जो तरीका है अलोकतांत्रिक, जिसमें लोग हाउस ट्रेडिंग करते हैं, 32, 35, 40 करोड़ रुपए देते हैं महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, रातों की दाल नहीं गली, उससे गिरा नहीं पाए। अमित शाह जी तो बोले कि गहलोत जी कभी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे और तो प्रधानमंत्री भी बोल दिए सर। ये कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। ये आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलते मेरे बारे में व्यक्तिगत, तो मैं तो इसको अच्छे सेंस में लेता हूँ कि कम से कम इतना टारगेट मुझे कर रहे हैं वो लोग। काफी सारे इल्जाम कांग्रेस पे लगे कि CM फेस क्लियर नहीं है, CM फेस क्लियर नहीं है। बीजेपी में वसुंधरा राजे जी भी इस बार क्लियर नहीं हो पाई, वो भी हम उनकी परवाह नहीं कर रहे, वो अपने घर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सर। ना उनके वो नॉन इशू बना रहे वो। और यहाँ की हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी स्कीमों को, हमारी कानून पास की, उसकी चर्चा ही नहीं करें, उसकी वो चर्चा नहीं करे, वो खाली भड़का के जा रहे हैं जनता को। भड़कने वाली जनता है नहीं। बीजेपी ने आखिरी सवाल था, बीजेपी ने लास्ट में सचिन पायलट का भी नाम ले दिया, राजेश पायलट जी का भी नाम ले दिया। नाम वो इतने घबरा गए, बुखला गए हैं कि जो लैंग्वेज काम लिए PM ने और गृह मंत्री जी ने, योगी जी ने, आसाम के मुख्यमंत्री जी ने और बाकी जो नेताओं ने एक ही लैंग्वेज सब की, इसका मतलब वो हार रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो राजस्थान में है, स्पेशली महिला अत्याचार, फिर खाली महिला अत्याचार पे नहीं पर दलित भी है और क्रिमिनल एक्टिविटी पूरे उसमें है। ये डेली का मामला है, महीने में नहीं, डेली का मामला है। तो एक तो ये बहुत लोग परेशान हैं। दूसरा बेरोज़गारी वाला जो वायदा उनने किया था, अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज कोई रीट की परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो पोस्ट्स हैं वो भर नहीं पा रहे हैं। सम 19 बार तो आपके पेपर लीक हुए हैं। सो लोग, बच्चे स्पेशली, उससे बहुत परेशान हैं। दे से अप टू दी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 70 लाख यंगस्टर्स जो बैठ नहीं पाए हैं और जिनको आशा थी पर कुछ हुआ नहीं है उसमें। हम लोग सोचा करते थे, क्योंकि ये रोज़ अनाउंसमेंट्स कुछ ना कुछ करते थे, बहुत कुछ काम किया है, पर फील्ड में जाओ तो मालूम पड़ता है कि ये तो खाली अनाउंसमेंट्स ही थे। Well, joining us on the broadcast is our colleague Aman Sharma, and he's joining us live from Jodhpur, which is CM Ashok Gehlot's bastion. A very good morning, Aman. Now, can you give us a sense of the atmosphere at the Gehlot's polling booth in Jodhpur and any notable trends or early voter turnout observations you can see? Well, Kohina, the vote has just about started to being cast here, and we are at the polling booth of Chief Minister Ashok Gehlot. This is Sardarpura, from where he has been winning since 1998. This is the polling booth in Mahamandir, Jodhpur, where the CM will come around 9:30 to cast his vote. And some early voters, as voting has just begun a minute back, we have some early voters, some elderly people, some women. We also saw a first-time voter. We are waiting for them to cast their vote and emerge from the polling booth. But an early morning, and in Jodhpur, at least, I've seen in such cities in the past that you do see
early people coming out early to vote. Even before taking their breakfast, people come here, and I saw, in fact, there are 4 polling booths, Kohina, in this compound, and there are 3. Then you can already see a small queue of people at the other polling booths. And Jodhpur remains a very, very crucial area for the Rajasthan elections. Of course, it's the bastion of Mr. Ashok Gehlot. He has won from Sardarpura since 1998 continuously. For the last 25 years, he's been the MLA. And Jodhpur, the last time, Congress won 7 out of the 10 seats, assembly seats in Jodhpur. This time, the BJP is trying to give a strong challenge to the Congress here. We know that the BJP MP from Jodhpur is Mr. Gajendra Shekhawat, who in fact had defeated the son of Mr. Ashok Gehlot in 2019 to win the Lok Sabha seat of Jodhpur. This was just 5 months after Mr. Gehlot had won the assembly election, and Jodhpur, as I said, 7 out of 10 seats were won by the Congress. So in a way, Jodhpur's 10 seats, Kuhina, are very, very closely contested. They remain in a way, the barometer of what is happening in Rajasthan elections. If the Congress is able to retain its stronghold of Jodhpur, the result in Rajasthan could be according to what the Congress believes it will be. But if BJP is able to make inroads into the Chief Minister's stronghold, then it might show that which way the election is going, because the BJP looks very, very confident in Rajasthan of winning the election, while the Congress is banking strongly on its 7 guarantees and the schemes that it has brought, the promises it has made, feeling that people will continue to trust what Mr. Gehlot calls his good governance, Kohina. Right, Aman. Like you already mentioned that Congress is already eyeing yet another term from here in Jodhpur. Now, are there any particular issues that the voters seem to be focusing on as they are heading to the polls today, this morning? Well, the issues are many, Kohina. For women, for farmers, for youth. The women, I think a lot of schemes by the Gehlot government for women, especially this very popular medical insurance scheme, the Chiranjeevi scheme, which has been launched for, families, 25 lakh free insurance. It has been upped. The promise is now that it will be made 50 lakh in the upcoming, if the Congress wins the election. There are this 10,000 rupees a year allowance announced for women by the Gehlot government if he wins. And we have some early voters here. If you would maybe want to speak to them. सुबह 7 बजे आप वोट डालने आए हैं. मुख्यमंत्री जी का ये पोलिंग बूथ भी है. मैडम, क्या सोचते हैं, क्या राजस्थान में क्या मुद्दे रहे हैं, क्या आपको लगता है एज अ वोटर आप क्या चाहेंगी जो भी सरकार बने? जो भी सरकार बने उसके लिए ये है कि वो राजस्थान को सबसे बेस्ट बनाए, और जो अभी भी राजस्थान में है उसको और अच्छा बनाए. जी जी, आपको भी ऐसा लगता है कि ये तो मुख्यमंत्री का गढ़ भी है कि मुख्यमंत्री जी ने काम किया? बहुत काम करने के अंदर मुख्यमंत्री जी नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है. जी जी. और आपको लगता है ये गारंटियों पे वोट डलेगा? जो गारंटी ये कह रहे हैं कि गारंटी देता है तो उसकी गारंटी ऑटोमेटिकली होती है ना. आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक गारंटी बन जाती है. जी. तो ठीक है, गारंटी का शब्द यूज कर सकते हैं, बाकी काम करने में कोई कमी नहीं रहती. These are almost the first voters here at the polling booth of the Chief Minister. Obviously, this is the Chief Minister's stronghold. So we have people who are speaking well of the Chief Minister because they know this is Mahamandir, Kohina, where the Chief Minister was born. This is the area of Jodhpur, Mahamandir, where the Chief Minister was born. He did a small rally here towards the end of his campaign, where he said, these inni galiyon mein main palkar khelkar bada hua. So this also an emotional connect of this area with Mr. Gehlot. When he comes here, we've seen his very affable nature of Mr. Gehlot, walking in the streets and speaking to people about, his days and what all he's done for the constituency. And obviously, 5-time MLA from here, he's since 1998, he's been the MLA from Sardarpura. So people have this affection for him. I think I have seen that while I was traveling in this area. Let us try and